Assalamu alaikum ji, and a very good morning. How are you all this evening, this morning, in fact? So, I am Maliha Nisbari, and yes, this is my very own podcast. Thank you to RJ Sophie, Studio S by RJ Sophie, and the wonderful team that is right in front of me. एक साहब मसरूफ़ हैं अपने फ़ोन के ऊपर, बट वो मेरे ही काम से मसरूफ़ हैं. जो दूसरे हैं वो हाथ बांध के यूँ करके बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं इनफैक्ट. और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम एज ए नेशन क्या हैं. और हम एज ए नेशन बड़े फ़र्क हैं. आई डोंट नो, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि हम एज ए नेशन क्या हैं. हम एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग हैं, एंड येट एट द सेम टाइम आई फील दैट हम इतने हार्ड वर्किंग नहीं हैं. हम थोड़े से कामचोर हो जाते हैं कभी कभी स्टिल फाइन, बट I think कभी कभी भी still not fine. But at some point in time, yes, we are one of the most brilliant nations on the face of the earth. हम हार्ड वर्किंग हैं, हम टैलेंटेड हैं, हमारे अंदर हर वो चीज़, हर वो गुण मौजूद है जो किसी एक अच्छे नेशन में होना चाहिए. Yet at the 75th anniversary, at the 75th birth anniversary or the Independence Day, what is that we are lacking as a nation? And I think what we're really lacking at the end of the day is the right projection. I would actually like to, now that I'm on camera and now that this is going to be on air, maybe after the 14th of August or before the 14th of August, this all depends on these two people who are standing right there. I would like to congratulate Noor Dastagir Butt. I am so proud of you, mister. I am so proud of you because, going to the Commonwealth Games and winning something as big as that gold medal, making us so proud. I am so very proud of you, and I'm so thankful to you because abhi jis tarah we were just talking to somebody. I was just talking to somebody, and हमने अपने नेशन को कभी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते. हमारे मुल्क के अंदर इतने अच्छे अच्छे काम होते हैं, हमारे मुल्क में इतने अच्छे अच्छे और अजीम तरीन लोग पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I recently found out about this organization, this NGO, and by the way, this is not a paid advertisement at all, but this amazing NGO called the Al Mustafa Trust in Karachi. And the Al Mustafa organization in Karachi Trust is run by this Haji Saab. I've forgotten his name right now, but amazing. वो जो काम कर रहे हैं वो कोई ऐसा काम है कि मैं एज अ पर्सन आई वुड से कि यार मैं कभी मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह में मुझे इतनी तो शक्कर दे कि मैं वो सब कुछ कर सकूँ जो मैं सोचती हूँ. मैं कभी सोचती हूँ कि मैं पानी के कुएँ बनवा दूँ, मैं कहीं वाटर प्लांट लगवा दूँ, बच्चों को स्कूल भेजूँ, एजुकेशन लिटरेसी में काम करूँ. बट वो माशाल्लाह वो सारे वो काम कर रहे हैं, फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ टू लोगों को हज पे भेजना. एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम हिज ओन पॉकेट एंड फ्रॉम द पॉकेट ऑफ दोज पीपल जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं. और ये सब वो लोग हैं जो अपने नाम ही नहीं रिवील करना चाहते, एंड विच इज़ हाउ इट शुड बी डन. वो कहते हैं ना कि जब तुम किसी के लिए चैरिटी करो तो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को नहीं पता होना चाहिए कि तुमने क्या दिया है और कितना दिया है. सो आई थिंक इन दैट्स हाउ वी हैव गुड पीपल, बट व्हाई डू वी हैव दिस प्रोजेक्शन ऑफ अ वेरी नेगेटिव सोसाइटी ग्लोबली. हमारे अंदर क्या ऐसी वजह है, क्यों हम ग्लोबली इतने नेगेटिव इमेज को कैरी करते हैं. एंड why not think about it? Why not give me a feedback and say कि हम क्या हमारे में ऐसी चीज़ लैक कर रही है. हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास रिसोर्सेज, एंड येट वी लैक समथिंग. कुछ तो एक गड़बड़ है ना. मे बी देयर इज़ अ कनेक्शन जिसका एक फेलियर है, जिसकी वजह से वी आर नॉट गेटिंग वेयर वी शुड बी. अदर देन दैट, येस, लाहौर हैज़ बिन वेरी वेरी strangely welcoming at the same time. मौसम अच्छा है, बुरा है, people are coming, people are going, people are coming in our lives, people are leaving our lives, we are leaving people, which is fine. Life has to go on, and that is the beauty of life. ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है जी, और ज़िंदगी की खूबसूरती को ढूंढना हमारा अपना काम है. Because you've got to open that door which is locked, because this is how life is. I was recently at LUMS and I was doing this, I was doing these multiple courses at LUMS, and I came across this bunch of extremely talented people from different walks of life. मेरे 2 class fellows थे, 2 sisters, year apart in terms of age, and they were hardly O levels or A levels के बच्चे. Brilliant, brilliant. इतना उनमें talent था. They wanted to become writers. They wanted to become creative writers. They wanted to become fiction writers, and that's how we met them. I met them in my fiction writing class. Same goes for another person. I came across this wonderful woman who's a health coach. She's a mental health coach, and she gives these
these amazing talks on how life is and ज़िंदगी की जो मुश्किलात, मैं कहती हूँ मैंने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम जब मैं लोगों को देखती हूँ मैं कहती हूँ यार हमारी तो ज़िंदगी, वी आर ब्लेस्ड, वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल अल्हम्दुलिल्लाह दैट वी आर ब्लेस्ड विद सो मच. लोगों की ज़िंदगियों की बहुत बहुत बड़ी मुश्किलात होती हैं. अल्लाह ताला ने हमें 10 उंगलियां दी हैं, 5 एक हाथ में पूरा हर चीज़, ना किसी चीज़ की कमी है ना किसी चीज़ की ज़्यादती है. एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट वी शुड बी थैंकफुल अबाउट. लोगों की ज़िंदगियों में एज आई वाज सेइंग बहुत बहुत बड़ी मुश्किलात होती हैं. एंड शुक्र करना जो है ना वो इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए. एक और दूसरा, तकब्बुर कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज तकब्बुर जो है ना वो इंसान को किस वक्त आपको ला के ज़मीन पे पटकते आपको पता नहीं चलता. ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको नहीं पता चलता. किसी को नीचा दिखाना आई डोंट थिंक किसी को भी ज़र्फ़ देता है. और अपना ज़र्फ़ इतना बड़ा रखें कि आप किसी की कही हुई बात को बर्दाश्त भी कर सकें और उसके ऊपर मुस्कुरा भी सकें. बिकॉज़ जो बदला है ना वो लेने का बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो ऊपर वाली ज़ात, वो उसका काम है, वो उसका काम है. इंसाफ दिलाना उसका काम है. आपके साथ जो कुछ हो रहा है या आपने जिसके साथ जो कुछ किया है, इंसाफ उसको दिलाना और इंसाफ आपके साथ करना वो उसका काम है. इंसाफ इंसान के हाथ में नहीं है. एंड आई थिंक बड़ी सारी यू नो द main maqsad of my podcast, and to begin with that podcast again I would like to thank Sophie for that, is because I wanted to, ye pani ki bottle thi by the way, I wanted to let things out of my system, and that is a very good way of letting things go. Letting things go is not easy. हम कभी वो एक होता है ना, you just hold on to things, बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को let go करना. But I think we should at some point in time, because you have to eventually evolve, grow, let go and accept the change that is coming in your life. और change को आप जितने open arms के साथ accept करेंगे ना उतना अच्छा होगा. On that note, I would like to tell you that we have this very amazing guest with us in our next episode. He happens to be a friend of mine, and he is also an educationist, and he is also somebody who's been in the field of art and theatre mostly. And also for animal lovers, I have this really, really amazing person who's also a friend of mine. Also happens to be an educationist at the same time, but is a die-hard animal lover. She is somebody जिसके अंदर मैंने इतना compassion towards animals देखा है, इतनी empathy towards animals देखी है कि अगर वो सड़क पर गुजर रही हैं और अगर कोई किसी गधे को भी वो जो ओनर ऑफ दैट डोंकी कार्ट होएगा, अगर वो उस गधे को मार रहा होएगा ना, तो वो अपनी गाड़ी से उतर के उस गधे वाले से लड़के वो गधा खरीद के घर ले आएंगी, जस्ट सो दैट वो उस गधे को ना मारे. सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. जानवरों के हकूक़ होते हैं, हम तो इंसानों के हकूक़ खा जाते हैं, तो जानवरों के हकूक़ तो बड़ी दूर की बात है. बट these amazing individuals, I have this very amazing individual who I wish to call on my show, who is a playwriter, writes these amazing shows for Hum TV and PTV, comes from a family of literary people, artists and कलाकार जिनको हम कह सकते हैं. And anybody you wish, you want to call over, I'm right here. Throw in your suggestions. Tell me who do you want to meet. Tell me who do you want to call on my show. Because this platform, I started blogging because I just wanted to experiment, how blogging would be. I'm no blogger, I will definitely say that. And I tried becoming that blogger, but I'm not that blogger. I wanted to talk about people who have no voice, or people who have done so much in life. For example, that girl Natalia, who did the Guinness world record and settled the, what do you call that, pie chart or that physics का वो जो पूरा हमारा आता है. So one of those people जिनमें बहुत talent है. So why not bring them to that platform जहाँ पर लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, and everybody has that thing in them. हम सब में अल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ डाली, that we are unique, just like our fingerprints. Nobody is the same. कोई सेम नहीं है, हमारा DNA सेम नहीं है. दुनिया में कितने करोड़ों के हिसाब से लोग हैं, किसी एक इंसान का फिंगरप्रिंट का जो इम्प्रेशन है वो सेम नहीं है. सो लाइक दैट एवरीबडी हैज़ सम टैलेंट इन दैम. किसी में कोई ना कोई अच्छाई है. Why not bring them to the forefront? Why not showcase them? And again I will say
कि if you know somebody, you know that that person has that talent, you know that that person needs to be shown and showcased to the world, you let me know. And I will try my best to bring them to this platform and ensure that they are, they are shown to the world. उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, वो हम दुनिया को दिखा सकें. And as mentioned earlier, I am no blogger, I am no podcaster. I am talking because I want to talk. मुझे बोलने का बहुत शौक है जी. I love talking. I can just talk for hours and hours and hours. और पीछे वाले जो 2 भाई हैं ना, वो मुझे ये भी नहीं बता रहे कि मैं कितनी देर से बोल रही हूँ. So yes, but I can just definitely talk. So this is what we're coming up with. I'm open to suggestions for names of the shows, of the show. I had one idea which was No Turning Back. The other was, Bari Talks, like Larry Talks. Why not? And so on. I don't know. मेरे दिमाग में तो यही फिलहाल 2 नाम थे. एक Godsend था, which was No Turning Back. The other was Bari Talks because that's what my surname is. And I want to talk to people who have something different in them. चाहे वो एक आम आदमी ही क्यों ना हो, बिकॉज आम आदमी के अंदर बड़े बड़े टैलेंट होते हैं, सो वाई नॉट. एंड एवरीबडी हैज़ बिन थ्रू सो मच इन देयर लाइफ कि इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू just know what the other person's life is. Because जब आपको मैंने अपनी पहली भी एक when we were doing trials for the podcast as students, I said कि ज़िंदगी में जब shift आता है ना, वो किसी को पता नहीं चलता. So always be nice and always be kind to the other person that you're talking to. I think that is it. And yes, अपना ध्यान रखिए, stay safe, stay sanitized, be nice to people, be humble, be down to earth, नमाज़ें पढ़ें. कोशिश करें कि किसी के साथ ज़्यादती ना करें. कोशिश करें कि जिसका जो राइट है वो उसको ज़रूर दें, चाहे आप हक पर ही क्यों ना हो, बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे ऊपर वाली ज़ात देख रही होती है. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू थैंक लॉट ऑफ पीपल who have been part of my journey, because my journey has not been small. And it's not been easy, but I would definitely want to thank my therapist. You know who you are. And my certified therapist, I would say, and all those people who were not my certified therapist but were there with me and helped me come out of a dark spot. I would definitely want to thank them. Studio S being one of them, and Lums being the other. My ex-bosses being, there. Those, and this is one of those times that testing times tell you who people are. So with that, I think I would say thank you so much. बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने मेरा साथ मेरे मुश्किल वक्त में दिया. And ये ज़िंदगी है जी, just keeps on going on and on and on. Like I can just keep on going on and on and on. बहुत देर बातें कर सकती हूँ. कितनी देर हो गई मुझे तो ये भी नहीं पता बातें करते हुए. But we will see you soon. And this is just a first episode of what might be there. And yes, by the way, I have this really amazing chef coming on show. She is brilliant. We've known each other for the longest while. We've known each other since we were in convent, and look where we are in life. She's a brilliant chef, runs her own catering company, and has come a very long, a very, very long way, a very long journey that she's had. So stay tuned, and I will see you soon. Thank you. Bye bye.